0 over Srimati Chaya Verma. Ma? I didn't read. I said this. I thought I have read the names. Tiruchi Siva, Mausam Noor, Santur Hussain, Nadimul Haq, and Sri Abir Ranjan Viswas. Sri K.C. Vedugopal gave a notice on rise of prices on essential commodities. I have already said, I am reiterating again, we will discuss it in detail during the finance bill because the finance ministry is concerned with regard to price rise also. Please take that opportunity. No, please. Right. One man. Right. And the poor people, sir. It's a Right. diesel, petrol, as well as LPG prices, sir. No, you have opportunity in the afternoon. I think you can speak on that. Little elaborate. Chaya Verma. These 0 hour also important. 20 issues have been listed. Please understand. Please cooperate. You already mentioned that has gone on record. I have taken your names also. देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम शांति देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा के डायरेक्ट जी I have taken शिक्षा the के names अधिकार की परिकल्पना है जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे के लिए स्कूल में फीस नहीं लेने का प्रावधान है। इसका पालन केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय में लड़कियों से 1800 रुपए और लड़कों से 2500 रुपए शाला विकास निधि, कंप्यूटर और प्रशिक्षण के नाम से फीस लिया जाता है। इस कोरोना काल में उन आम बच्चों की बात कर रही हूँ, सर्विस वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। कोरोना काल में ऑनलाइन उनके अभिभावकों से पैसा लिया गया और जिन बच्चों ने फीस नहीं दी उनके नाम काटे गए। सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि उनका नाम जोड़ा जाए और कुछ माननीय सांसद लोकसभा में भी चर्चा हुई कि केंद्रीय विद्यालय जो सांसद कोटा है उसे काटा जाए। कुछ हमारे बुद्धिमान सांसद जी कह रहे थे कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारा प्राण खा जाते हैं। आप जनप्रतिनिधि जनता कोटा को बढ़ाया जाए। हम जनप्रतिनिधि This is not the way. This is not go on record. Nothing said from Srimati Chaya Verma will go on record, either on telecast or in print also. There are some members who have developed this habit. In spite of chair advising, cautioning also, they continuously continue to speak. That will be only momentary satisfaction, or you can call it as vicarious satisfaction because it is not going on record. There are two views. I got your point and I was about to mention it. Some members want the number to be quota, so-called quota to be increased. Some members came and met me and told me, sir, this should be done away with. So let it be discussed. आप सदन का अधिकार क्यों आप हनन कर रहे? Sri Abir Ranjan Viswas, please, no comment. No. This is a very bad habit of sitting and just making comments. I don't know why you otherwise you come prepared. I know that you work hard also. Why you are unnecessarily spoiling your track record? So thank you. So my 0 hour is related to data breaches in CISF records. Sir, on March 6, 2022, the Central Infrastructure Security Force, that is the CISF, suffered a data breach. Several internal documents and personal records of serving officers were freely accessible online for number of days. So the CISF provides security to more than 300 industrial units, government infrastructure projects, facilities and establishments all over the country. It has more than 1,06,000 members, making it one of the largest police forces in the world. Sir, considering the scale of their operation and the nature of its work, any such data leak or breach can have serious and severe implications. Sir, the data that was leaked contained 2,46,000 addresses of CISF files and PDFs, as well as health records and other personally identifiable records of CISF personnel. The leak of such data is a gross violation of their privacy and an undeniable threat to national security. Records of such nature are usually put up for sale on the unregulated dark web, as we know, where they can be bought illegally for malignant purposes. The information should not be publicly accessible. Considering the number of data breaches has quadrupled since 2020, this is very alarming, sir.
with 9 large-scale beaches in 2021 alone. It is important that the government takes sincere note of this crisis. Sensitive and personal information cannot be vulnerable to leaks. It violates our citizens' right to privacy and threatens the nation's sovereignty. Thank you, sir. Thank you. Associate, please send the names. Sri Ramachandra Jangara, Dr. Ashok Bajpai. One and a half minute. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं गीता के एक श्लोक के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। श्रेयान सब धर्मो विगुणो पर धर्मात् समवस्थितात् सब धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। मान्यवर, गीता के अनुसार धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि धारण करने योग्य जो सनातन सत्य है उसी का नाम धर्म कहा गया है। मान्यवर, उपरोक्त श्लोक का अगर सही अर्थ अनुपालन अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारे देश की अलग अलग जनजातीय श्रेणियों में दिखाई देता है। चाहे वह चित्रकला हो, नृत्य हो, वादन हो, गायन हो, वेशभूषा हो, अनेक रूपों में वह अभिव्यक्त होती है। जनजातीय समाजों की दैवत के प्रति आस्थाएं, उस आधार पर विकसित समाज रचना व्यवस्थाएं, जीवन मूल्य जिन्हें वे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों के रूप में देख सकते हैं, फिर वह चाहे कर्मा पूजा हो, साहुल पूजा हो या ग्राम का सरगना स्थल हो, भील समाज में मातावन हो या पारंपरिक गायन हो, अपने अपने विभिन्न देवताओं के प्रति उनकी आस्था हो, उनकी पूजा हो, सभी में जनजातीय संस्कृति की झलक अलग से दिखाई देती है जो सनातन चली आ रही है। मान्यवर, जनजातीय राजाओं का इतिहास, उनकी न्याय व्यवस्था उनकी इतिहास के पन्नों में मिल जाती है। विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेने और भारत को सामरिक आर्थिक दृष्टि से बचाने के लिए जनजातीय योद्धाओं के बलिदान की घटनाओं से इतिहास भरा हुआ है। मान्यवर, 1857 की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में जनजातीय लोगों द्वारा मिली। 1870 में वासुदेव बलवंत फड़के के पकड़े जाने के बाद जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों को नाकों चने चबाए। उसके बाद जनजातीय समाज अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। 1870 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद इन समाजों पर भीषण अत्याचार किए गए तथा 1870 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद इनकी जंगलों से बेदखली शुरू हो गई, जिनको ये माता समान समझते थे। यही नहीं, 1911 में हिंदुओं से अलग पंथ रामचंद्र जी है, फिर भी भारतीय समाज में फूट डालने का अंग्रेजों का प्रथम प्रयास था। इसी को 1931 की जनगणना में दोहराया गया। उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए दो बालक कर दिखाए गए, लेकिन फिर भी उनका नाम भी है, इसलिए आपने रेज किया। प्रावधान किए गए जिनमें जनजातीय आरक्षण सुविधा भी एक विषय है। मान्यवर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ईसाई मिशनरियों द्वारा कहीं के मुस्लिम मुल्लाओं द्वारा इनके धर्मांतरण के प्रयास जारी रहे। अलग अलग भागों में कुछ लोग धर्मांतरण, डॉक्टर अशोक बाजपेयी, लेकिन माननीय सभापति, मैं संविधान सभा में प्लीज हो गया, मैं क्या करूं? जातियों, अनुसूचित जनजातियों में रेज करिए को विकास, देश की विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में अलग से व्यवस्था करने का काम किया गया। माननीय संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोग। अशोक जी, समय समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? आप आपस में चर्चा करिए आगे। नहीं, ऐसा नहीं सकते। के Veena. Sure. Honorable Chairman. Yeah, thank you, Honorable Chairman. In this August House, that the important issue relating to the economic development of tribal people living in the state of Assam, Mizoram and Manipur along the river Barak. As we all know that the national waterway number 6 is the waterway in Barak River. You are speaking in Mizo? Yeah. Please, carry on. As we all know that the national waterway number 6 is the waterway in Barak River between Banga and Lakhipur in Assam. The length of the national waterway number 6 is 121 kilometers. From Banga, which is Assam-Bangladesh border, up to Lakhipur town in Assam. I want to inform honorable member of this house that there is one river junction, Tipaimu, which is at the upstream of Barak River, about 100 kilometers away from Lakhipur.
at Mizoram, Manipur border. We can sail on board down to Bay of Bengal from this Dipaimuk Junction to this Barak River throughout the year. So I kindly request the Union Ministry of Port, Shipping and Waterway to extend this National Waterway number 6 up to Dipaimuk, so that the tribal people living in these areas could utilize this waterway in a large extent. The Ministry of Transport, Government of Mizoram has already submitted this proposal to the Union Ministry. Honorable Chairman, I'm very, very happy for speaking this in the presence of an Honorable Minister of Ship Waterway, Sonwal G. Yeah, he knows very well about this way. Thank you, Chairman. Thank you. Sri K. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. In the past 1 year, एक farmers of the मिनट, country. कुछ लोग अभी बोल रहे, एक मिनट, कुछ लोग कह रहे सर नाम वहाँ अपीयर नहीं हो रहे, वो उसका एक कारण यह है जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, अभी तक वो सिस्टम है, तो डिस्टेंस भी थोड़ा keep in mind, please, sorry. Sir, in the past 1 year, our farmers have been very badly hit because of the significant rise in the fertilizer prices, sir. On an average, prices of various fertilizers have increased by 45 to 60%. This has pushed the input costs of the farmers' produce, and which is gradually eating away the profits, meager profits which the farmers will earn out of the agriculture, sir. Particularly very marginal and farmers are very badly hit. The hike in fertilizer prices, another addition to the already long list of problems which farmers are facing, sir. With the ongoing conflict between Russia and Ukraine, the fertilizer supply chain is expected to be hit very badly and anticipated, since Russia and Ukraine contribute to 10% of the India's total fertilizer imports from these two countries, sir. It is likely that fertilizer prices will see the same fate as petrol and LPG prices, which have gone up, crude oil prices have gone up significantly. Another hike in fertilizer prices will further the agony of our farming community, sir. In the current year budget, which Honorable Finance Minister has presented, there was a 30% reduction in fertilizer subsidy from 1.4 lakh crores to 1.05 lakh crores, sir. It is baffling that the government has reduced the fertilizer subsidies when fertilizer prices have been on the rise in the past 1 year, sir. This anti-farmer move of the government is highly deplorable and unfortunate. In the hour of crisis, the government must do the right to the farming community, and hence I urge the government to increase the farmer subsidy for the farmers at the earliest, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Associate नाम दे दीजिए, श्री कनक मेडल रविंद्र कुमार. Thank you, Honorable Chairman, sir. ये इतना एकदम thick color लगा के आया. Today is an important day for me because our party was a 40th formation day founded by late founder N.T. Rama Rao. That's it. That's the 40th formation day. On this occasion, I once again thank you, sir, for giving this opportunity. Sir, Chairman, sir, illicit liquor is a very serious means across the country. Why I am saying it is a very serious? Because it affects the lives of the people. Sir, instance of deaths due to consumption of contaminated liquor has increased recently. If last 6 months such incidents have taken place in many parts of the country, the recent one that occurred is in Jangareddy in West Godavari district of Andhra Pradesh, in which more than 27 persons died, but these deaths were projected as natural deaths. Our party president and former chief minister Sri Chandrababu Naidu Garu visited the place instant and spoken to the victims and paid ₹1 lakh each deceased family. Such incidents create law and order problem in the place of states where it occurs. Such incidents also happened in other parts of the country in recent. The tragedy incidents that have happened in Andhra Pradesh, Bihar and other states are grim reminder of inhuman practices that exist in the country. Sir, National Crime Records Bureau, NCB, identify the details under the heading of deaths due to consumption of spurious and adulterated liquor
Such deaths are in the year 2020 is 947, out of which 18 deaths in the state of Andhra Pradesh. This year, 27 deaths. This amply shows illicit liquor mafia have put the lives of the people of Andhra Pradesh into peril. If such are allowed to happen without any hindrance, the lives of the people, particularly the youth, will be in danger. Certainly a situation has arisen to act stringently in the matter has arisen. I am very much proud that our Honorable Chief Minister, Sri Jagannath Reddy Garu, has promised that the entire ban for the liquor. But unfortunately, the state is running the liquor business. Right, Sir, please. finally, I request the Honorable urge the government to take immediate steps to curb the means of illegal spurious liquor, particularly in the state of Andhra Pradesh, and urge the order of the probe regarding the recent that had happened Andhra Pradesh by central government agency. Another surprising fact is the future revenues on liquor being escrowed to raise borrowing Right. to present expenditure. The This concern unfortunate about illicit liquor everywhere in the Thank you, country. sir. On birthday, why you want me to say something which is unpleasant? Sri Abdul Wahab. No, Ravindra Kumar comes prepared to export in Sir, 0 thank you, hour, sir. special mention, and also Sir, in question my- hour, my- supplementary questions, etc. also. But at the Sir, same time, Sir, my subject is inadequacy of passenger ships to Lakshadweep. Sir, the people of Lakshadweep are facing difficulties to travel to Lakshadweep with an adequacy of passenger ship. Earlier, there were 7 ships and multiple other vessels that had facilitated the people of Lakshadweep from Kerala. Later, the number of ships reduced to 1, which connects people of Lakshadweep to Kochi. 2 ships, namely Amini Dweep and Minikoi Dweep from Bepur port in Calicut, is currently not in service. 2 other ships, namely Arabian Sea and Lakshadweep Sea, which had 300 passenger capacity, stopped its service without any prior notice and reason. These ships are docked at Kochi. MV Karavati, the largest ship with 700 capacity, even after 3 months is not repaired. At present, there are only 2 ships which has capacity of 400 passengers each. These ships are only based at Kochi. People of Lakshadweep have to wait weeks after week in Kochi to get tickets. Tourism industry is also severely affected with less number of ships. Ticket fare has increased by 100% for Lakshadweep people and people from other states too. Therefore, I request the government to urgently look into the matter and demand to reinstate at least 5 ships, 3 from Kochi, 2 from Bepur, Calicut. They shall ease the difficulties faced by people of Lakshadweep. I also demand to reduce the fare of ships, consider the livelihood of alleviate difficulties of Lakshadweep people, and set up an emergency assistance mechanism in case of ship being stranded in the sea. thank you, Mr. Wahab. Associate. You want to associate or you want to visit Lakshadweep? Associated. But no reduced fare, normal fare for MPs. Sri Tiruchesiva. Thank you, Chairman, sir. Sir, according to the NCRB, National Crime Record Bureau report, between 2018 and 20, around 40,000 cases have been registered under POCSO, sir. Sir, these are registered cases and there are many unregistered cases. Sir, the number declined between 2020 during the COVID period, but now it has started rising again, sir. Sir, children are very vulnerable in our society, and this sort of sexual abuse against them impacts them very much physically and mentally, and sometimes lead to traumatic memories which the child may carry throughout their life, sir. Sir, the government which enacted the POCSO, of course, though it is effective, but there is a vast gap between the awareness of the act among the children and also different mechanisms in place for addressing the child sexual abuse. Sir, a recent survey undertaken by the Outlawed India has revealed that a majority of the Indian schools either don't have a mechanism for dealing with such situations, or if they do, a significant majority of the students are not aware of the act at all, sir. Sir, the gap that is, it remains not only because of the implementation,
but the awareness of the act among the students and also different the mechanisms that are in place that ought to be. Sir, as observed by experts, many schools, often the child is not aware even that it is it's a sexual abuse, sir. Sir, out of the Indian schools, only 36% of the schools are aware of it, and 39% of the students are aware of that. And mostly the students or the children are scared to report it to their parents, but for most of the cases, the perpetrators are close relatives or who are known to them. So this is a very, very serious issue, sir. And sir, the absence of mechanism has to be addressed very seriously. School is one of the places where the children spend most of their time away from home, and thus it becomes very important, sir. There is a need for immediate intervention to make it mandatory for every school, sir, that regular workshops are needed for both students and teachers, and awareness must be created. It should be made compulsory for all schools, sir, that the children first of all must know that they have to report. They are not aware of it, whether it is an abuse, and the reporting channel also. So I urge the government to take it as a very serious issue and do the needful, sir, to address the issue. Thank you very much. Dr. Fauzia Khan. And the names. Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, I wish to reiterate the fact that the most visible indicator of the development of any nation is through the quality of its roads, sir. The government bolsters the vision that road safety is made an integral part of road design at its planning stage. Sir, yet the recent data released by the Ministry of Road and Transport Highways, MORTH, states the fact that more than 4,000 and more than 3,000 accidents have occurred in the year 2019 and 2020 respectively due to potholes. Sir, according to a research by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, road accidents have cost India about 3 of its gross domestic product per year, or about 58,000 million US dollars in absolute terms. Since pothole deaths constitute an integral part of these road accidents, there is a recurring need to strengthen the Motor Vehicles Act further to hold the contractors and the officials liable under the reasons for negligence, sir. Sir, despite the safety standards set up by the central government, and road contractors and engineers are still not held criminally answerable for causing deaths and injuries, which organizations like Save the Life Foundation are demanding, sir. Especially when accidents occur because there are no proper signs or barricades which should be placed as caution, sir. MORTH specifications are not followed by the contractors. Visits are not made by the officials as per the rules. Bad quality construction results in bad quality roads, which results ultimately in accidents, sir. Hence, I urge MORTH that apart from formulating a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on education, engineering, enforcement and emergency care, the penalties and punishments on the responsible party should be implemented to improve the situation, sir. Thank you. Thank you, Fauzia ji. Sri Sujit Kumar. Thank you, sir. Sir, today I wish to speak on the lesser explored area of imprisonment clauses in Indian business laws, and wish to bring to the notice of the House the existence of a web of acrimonious laws which is seriously deterring entrepreneurship and startup culture in our country and negatively affecting our economy. Sir, as per the World Bank's Ease of Doing Business Report 2015 ranking, India was ranked 142, which improved to 63rd position in the year 2019, the year for which the last report is available. Sir, very flattering improvement, and I certainly commend the government and applaud it for taking many encouraging steps to improve business climate in our country. But sir, in one area the picture is not as rosy. Sir, as per a recent report by the ORF, Observer Research Foundation, titled Jail for Doing Business, there are 1,536 laws. Yes, 1,536 laws for doing business in India.
and half of which carry imprisonment clauses. Within this 1,536 laws, there is a web of 69,000 compliances and 6,618 annual filings. Sir, you'll be shocked to know that on an average, there are 10 regulatory or compliance changes every day. And our entrepreneurs are supposed to keep tab of all these changes on a daily basis, 10. Sir, we all know, sir, the consequences of criminal liability is humongous in our country, impacts a person's liberty and position in society. Sir, in criminal justice system, mens rea or criminal intent is paramount, sir. If a person has a guilty mind and commits an act with a guilty mind, then he or she should be punished. But oftentimes our entrepreneurs are facing jail and imprisonment even for minor lapses rather than willful action to cause harm or to defraud. I'll give an example. Sir, in IPC, assault or the use of criminal force on a woman with the intent to disrobe her carries imprisonment of between 3 to 5 years in IPC. The same imprisonment terms stand for not furnishing monthly details of inward supplies in GSTR2 form under the GST Act 2017. Sir, the same terms of punishment for assaulting a woman to disrobe her as is for not furnishing monthly GST returns. Sir, this dissonance is manifestation of the narrative that entrepreneurs are criminals and they are evil, wealth creators are evil, and they should be curbed through punishment. Sir, who are the biggest beneficiaries of all this? Of course, the chartered accountants, the CS, and the lawyers. The intermediaries have become suppliers of regulatory stents, and sir, they are providing legal angioplasty to cleanse this cholesterol. Right. Sir, to conclude, sir, I'll strongly urge the government that if we are to reach our target of $5 trillion economy in the next 2-3 years, and to become the third largest economy in the world, then... Right. Thank you, Sujit Kumari. He was a police officer. He has the background of police officer. But I must tell you, regulation is required, but regulation should not be made into a strangulation. It has to be reversed. Sri Revati Raman Singh. थैंक यू चेयरमैन साहब। मानवर, मैं आपके माध्यम से सदन में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जैन समाज पूरे देश में फैला हुआ है और मानवर जैन समाज के लोग इनकी 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्षस्थली संवेद शिखर पर्वतराज है, जो कि झारखंड में स्थित है। मानवर 2 अगस्त 1919 को केंद्रीय वन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्षस्थली संवेद शिखर पर्वतराज को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया। मानवर, यह जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ, जहाँ सदियों से आध्यात्मिक विकास की यात्रा के लिए जैन समुदाय लोग जाते हैं। महोदय, मैं आपसे माध्यम से सदन में ये मांग करूँगा कि जैन समाज के लोग मांस मदिरा इसका सेवन नहीं करते, न जीव हत्या करते हैं मानवर, लेकिन ये होने से वहाँ पर मांस मदिरा इसका सेवन बड़े पैमाने पर होने लगा है। मानवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि इस पर रोक लगाएं और वहाँ पर उसको आध्यात्मिक शिखर रहने दें, आध्यात्मिक उसको पर्यटन का स्थल न बनाएं जिसमें मांस मदिरा का सेवन हो सके। धन्यवाद। Thank you. Sri John Bittas. Thank you, sir. This is to remind the government about their commitment to infrastructure projects. Sir, the Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport, once completed, will be the deepest port in India capable of handling motherships. Having proximity to the international ship route, it will coexist and compete with international ports like Colombo, Singapore, and Dubai. The salient features makes the Vizhinjam port a natural choice to get classified as a major port and included under the Sagaramala program or any other suitable programs
so as to get financial assistance from government in providing last mile rail connectivity to the port. But sir, Vizhinjam port is still classified as a non-major port, and government have also, not so far, responded positively about financial assistance for establishing rail connectivity to Vizhinjam port. So the agency entrusted by the government of Kerala brought in a DPR which said that 1,053 crores would be enough for having a rail connectivity to the Vizhinjam port. Sir, unfortunately, the Southern Railway worked on the DPR submitted by the government of Kerala, and the cost has been raised by 100%. Now, the present DPR approved by the government of India, that is railway, is rupees 2,104. And nobody knows what is the rationale and logic behind this steep hike. And the government needs to think that the port is handled by none other than Adani's. So I would request the government to look into it and make sure that the port is, the rail connectivity is made a reality, and the port is also a workable proposition. Thank you, sir. Thank you. G.C. Chandrasekhar, Kannada. Chairman sir, I will speak in Kannada. Sir, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 3 ಹಾಗೂ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಕ್ಕೊರಳಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 80ರಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಗೋವಾ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಜನಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ದೇ, ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿರೋ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ 3 ಎಕರೆ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ ಈ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 80 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 28 ತಾಲೂಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 5.9 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು 1,22 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 13 ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರನ ನಾನು ಈ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. He was suggesting that irrigation projects in the North Karnataka should be taken up on priority because people are migrating, like lack of water. That is the essence of what he has said. They're going to Maharashtra and Bangalore and other places. Sri Sushil Kumar Modi and then सभापति महोदय, Wilson also. So you have 2 minutes. सभापति महोदय, पिछले 50 वर्षों से देश के अधिकांश राज्यों में अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनी हुई है और उसी ओबीसी लिस्ट के आधार पर एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है. और जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ तो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में भी उसी ओबीसी लिस्ट के आधार पर और आरक्षण दिया जाने लगा. लेकिन अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
कि एजुकेशन और जॉब की लिस्ट अलग होगी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लिस्ट अलग होगी, और इसका परिणाम ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को स्थगित करना पड़ा है। कर्नाटक में और बिहार में भी चुनाव कराना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अलग लिस्ट बनाना ये बहुत ही कठिन काम है। और कोर्ट ने कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए and to conduct a rigorous empirical inquiry into the nature and implications of backwardness को local bodies within the state। राज्यों के पास कोई empirical data नहीं है, और ये भी कहा कोर्ट ने कि हर लोकल बॉडी का रिजर्वेशन अलग होगा और हर लोकल बॉडी की लिस्ट भी अलग होगी। उपसभापति महोदय, ये काम बहुत कठिन काम है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट, बिना ट्रिपल टेस्ट के आप इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। और कोर्ट ने यह कह दिया सभापति महोदय कि डी रिजर्व ओबीसी सीट्स इन ऑल फ्यूचर लोकल बॉडीज में मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से एससी एसटी के लिए एक ही लिस्ट है जिसके आधार पर एजुकेशन, जॉब और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी एक ही लिस्ट के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और इसके लिए अगर आवश्यक हो तो कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। विल्सन, मिस्टर विल्सन। Here, there is a deadlock and there is a constitutional crisis. So I wanted to bring to the kind attention about this crisis. Sir, the constitutional reservations to OBC in local body elections were brought in the year 1992. Even after 28 years, we are yet to implement the OBC reservations fully. In March 2011, pursuant to 15th Lok Sabha passing a resolution to undertake socio-economic caste census, which includes census of all castes other than SC and ST, the Union Cabinet spent about rupees 4,893.60 crores and data were collected. The raw data was handed over to the Niti Aayog chairman, but till today they have not sat and they have not verified whether this raw caste data is correct or not. Sir, the Honorable Supreme Court has held that the OBC reservation in local body elections can be given only when empirical data is available and only when a dedicated commission approves it. This situation has resulted in a constitutional deadlock. The Union government, through a press release dated 20/12/2021, said it will file a review petition to allow political reservation of OBC in local bodies. What is your But demand? till today they have not done it. So, one hand the constitution provides for OBC reservation, on other hand there is a deadlock by the court judgment. Sir, hence I earnestly appeal to the Honorable Prime Minister through this August House to intervene and break the constitutional deadlock by either releasing the caste census collected during SECC 2011 to all states, or bring an amendment to Article 243D6 and Article 243T6 of Constitution of India that mandates reservation of OBC in local body election based upon the empirical data collected by the states under Article 342A3 and uphold the social justice at the local body level. Thank you, Chairman, sir. Thank you. Mahmood Nadimul Haq, whoever want to associate, please send their names. Sir, thank you, sir. Not with Nadimul Haq, but with the other. Issue, उनका issue के बारे में. Please associate with me also, sir. Then after hearing you, without hearing also, if people start associating. Thank you, sir. Sir, the World Head Injury Awareness Day was observed around a week ago on 20th March, sir. With road accidents recognized as one of the leading causes for head injuries, the fact that India occupies the first position in road accident as admitted by the Transport Minister himself is fear-inducing. As per a recent World Bank report, India accounts for 11% of global deaths from road accidents, sir. Contributing to these worrying figures is the rampant use of white LED headlights in 2- and 4-wheeler vehicles, sir. Many of us see it as a fashion trend and they use these white lights, sir. This poses a serious problem as the chances of vehicle crashes increases when a vehicle approaching from the opposite side uses white LED headlights that tend to be blinding. It may be noted that such headlamps are in contravention of the Motor Vehicle Act, which penalizes vehicle modifications, sir. Some states even have rules prohibiting white LED headlamps. Despite these measures, such lamps continue to be used all over the country, leading to road accidents, causing grievous injury and sometimes even death. So in 2018, India lost 0.77% of its GDP due to these grievous road accidents, sir.
Study shows that the implementation of MVA Act and the Central Motor Vehicle Rules have been negligent. In 2020, India pledged to reduce the number of road accidents by 50% by the year 2030. Hence, that fact that the fatality from road accidents have not decreased is concerning. Sir, there is therefore a need to frame legislation that bans the use of wide headlamps and to ensure its strict implementation once it's framed. Sir, my last point, sir. Our Honorable CM, Mamata Banerjee, in Bengal, we follow the motto, says safe drive, safe life. Right. Sir, it is best to replicate this throughout the country. So I urge the government to take this into cognizance and take strict action to ensure the safety of our roads. Right. Thank you, sir. Srimati Rajani Ashok Rao Patil, Associate, please send over. Thank you, sir. Sir, I wish to bring to your kind notice a genuine grievance of aspirants for civil examinations, other central examinations, SSC, IBPS, IIT, CPO, etc. These aspirants were either age barred or attempt barred, appeared and non-appeared for 2020 and 2021. A large section of aspirants who appeared in this COVID situation for examination during the year 2021 could not give a fair effort. Some of the aspirants were themselves affected, some of their kin, and many were also the frontline workers. The pandemic robbed their opportunity of making a fair effort to clear their examination. These aspirants approached Honorable Supreme Court, sir. But, however, Honorable Supreme Court said that the decision lies with the central government, so you should go to the central government. Students who have faced COVID hardships in large numbers, they cumulatively account around 2 crore students are there, sir, who are affected by the pandemic situation and could not give the examination. By looking at the hardships faced by the candidates and adverse policies that restricts corona-affected individuals to attempt the exams, some state government have provided them the relief. Uttarakhand, Tripura, Maharashtra, Gujarat, Orissa, and Jammu Kashmir. Right, Sir, through you, I would like to request that that those students should provide extra attempt and relaxation in their examination. Right, Rajani ji. Thank you. Sri Sanjay Seth, Associate Varnam. हम ये सब स्वीकार करते हैं कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का भौतिक अधिकार है। देश की तरक्की में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उसकी साक्षरता दर अधिक से अधिक हो। महोदय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2020 के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 77.7% है। ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर 73.5% है और शहरी दर में 87.7% है। सर, जहां सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और कुछ शिक्षा संस्थान जो निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, संजय जी, प्लीज कंक्लूड। हाँ जी, उनके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, परंतु मुख्य समस्या यह है कि निजी संस्थान केवल पैसा कमाने में रुचि रखते हैं। आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ग्रामीण और शहरों में खोले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे साल भर की मोटी फीस लेकर उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई कराते हैं और बाकी सारा साल के अंत में अच्छे परिणाम के लिए नकल कराते हैं और पेपर लीक कराते हैं। इसके वजह से वो अपनी रेटिंग बढ़ा लेते हैं बाद में, और इससे सरकारी डिमांड क्या है आपका, क्या है सर? ये जो नकल करा रहे हैं, इससे सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सर, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, वो वहां पे पास नहीं कर पाते, उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो सर, हमारा ये कहना है सरकार से कि इस नकल की समस्या को रोकने के लिए कोई कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे कि सर बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनको आगे नौकरी मिले। राइट संजय जी। श्री ब्रिजलाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं जी थैंक यू आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को असॉल्ट राइफल
AK-203 जो 5th जनरेशन राइफल है उसको शीघ्र दिया जाए। महोदय, आज़ादी के बाद हमें विरासत में 303 राइफलें मिली थी जो 62 वार में भी प्रयोग हुई थी, जो हमारी हार का एक कारण रही। उसके बाद 63 में सेल्फ लोडिंग SLR राइफलें मिली और 90 के दशक में अंत में हम 5.56 mm इंसास राइफल का प्रयोग कर रहे हैं, जो कारगिल वार में उतनी प्रभावी नहीं रही क्योंकि इनमें स्टॉपिंग पावर नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने AK-203 राइफल की फैक्ट्री अमेठी उत्तर प्रदेश में लगाई और उसमें शीघ्र प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी डिफेंस फोर्सेज को और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में लगी हैं, उनको 5th जनरेशन की AK-203 राइफल शीघ्र उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर विकास महात्मे, एसोसिएट, प्लीज। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके No माध्यम से comment, please. सरकार का ध्यान एक DNT ट्राइब्स जो है उनके परेशानियां, कठिनाई की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। DNT यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जैसे इन्हें घुमंतु भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसमें धनगर कम्युनिटी यानी शेफर्ड, जो पाल, बघेल, गडरिया, गायरी, कुरुबा, कुरुमन इत्यादि नामों से जानी जाती है, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से। और ये पूरे घुमंतु मिलकर करीबन 10% से भी ज़्यादा आबादी है, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। जैसे SC, ST, OBC कहा जाता है, वैसे घुमंतु या DNT करके अलग ग्रुप बनाया गया नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है, इनको पहले अंग्रेज काल में क्रिमिनल कम्युनिटीज़ यानी नोटिफाइड ट्राइब्स करके कहा जाता था, लेकिन ये तो कम्युनिटीज़ फ्रीडम फाइटर थी सर, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती थी, इसलिए उनको क्रिमिनल कम्युनिटीज़ करके कहा गया था। अभी हमने उनको डीनोटिफाइड किया है, लेकिन अभी भी उनका शोषण और डिस्क्रिमिनेशन शुरू ही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जैसे नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें SC के, ST के, OBC के कितने लोगों पर केसेस हुई है दर्ज, इसका ब्यौरा दिया जाता है। उसी प्रकार घुमंतु के लिए भी एक कॉलम बने, DNT का भी एक कॉलम रहे कि इनके ऊपर कितने केसेस हुए, ताकि ये पता चले कि कितना अन्याय हो रहा है उन कम्युनिटीज़ पे। दूसरा, सेंसस में भी इनके तरफ ख्याल दिया नहीं जाता है, SC, ST, OBC के तरफ दिया जाता है, DNT का कोई अलग से सेपरेट कॉलम नहीं है। मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि पहली बार घुमंतु के लिए एक स्कीम लाई गई है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो इसके ज़रिए हाउसिंग, एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ के लिए स्कीम बनाई है, लेकिन यह ऑनलाइन है, अच्छी बात है। वो उनके तक के कैसे पहुँचे और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे बढ़े, और इसमें जो कठिनाइयाँ हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, तो इसकी वजह से फॉर्म भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो उसके लाभार्थी कैसे बढ़े, इसलिए कोशिश हो सरकार की तरफ से। ये 3 मांगे मेरी हैं। धन्यवाद महात्मा जी। श्री नरहरि अमीन। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं आज एक ऐसे गंभीर विषय डायलिसिस केंद्रों की संख्या में विस्तार करने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि देश में करोड़ों गरीब दर्दियों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के साथ साथ हाल में देखा गया है कि किडनी संबंधित बीमारी में डायलिसिस के दर्दियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। देश में हर साल 2,20,000 नए दर्दी बढ़ते रहे। दर्दियों की इस बढ़ती संख्या में देखते हुए हर साल 3,40,00,000 दर्दियों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। एक बार डायलिसिस की ट्रीटमेंट के लिए रुपया 2,000 से अधिक खर्च हो जाता है। ऐसे में किडनी के फेल्योर दर्दियों को वार्षिक खर्च में 3 से 4 लाख तक का खर्च होता है। भारत में करीब 5,000 डायलिसिस सेंटर है, पर ज्यादातर निजी क्षेत्र के है और गांवों से दूर है। देश में गांव और छोटे शहरों के दर्दियों को डायलिसिस करवाने के लिए दूर और कभी-कभी बड़े शहरों तक आना पड़ता है। डायलिसिस सेंटरों घर से दूर होने के कारण दर्दियों और उसके साथ रहने वाले अन्य व्यक्तियों को आने जाने का, भोजन और ठहरने का खर्च भी बढ़ जाता है। भारत सरकार द्वारा
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में डायलिसिस सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी भी गांवों और छोटे शहरों में डायलिसिस सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण किडनी के रोगियों और उसके संबंधियों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश में ऐसे डायलिसिस सेंटर की संख्या बढ़ानी चाहिए और इस अभियान में देश में स्वैच्छिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ को शामिल करके ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। इन स्वैच्छिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ को राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल के पैटर्न पर जमीन, बिजली, जल जैसी सुविधा राहत दर से देनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा सरकार को यह भी अनुरोध है कि डायलिसिस प्रक्रिया के उपकरणों के लिए आयात में सीमा शुल्क और अन्य कर की भी राहत देनी चाहिए। मुझे ये भी कहने में अत्यंत प्रसन्नता होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की तर्ज पर गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किए गए गुजरात डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में गुजरात में 92 से अधिक डायलिसिस सेंटर स्थापित किए गए हैं। यही पैटर्न पर अन्य राज्यों को भी डायलिसिस का कार्यक्रम विस्तार करना चाहिए। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के दर्दियों को डायलिसिस प्रक्रिया में होने वाले खर्च में राहत हो सके। राइट नरहरि जी, मैं सबको और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, विषय उठाते समय पढ़ना